कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने आज चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के 62वें कॉन्वोकेशन से खिताब किया। उन्होंने इस दौरान इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। अजीत डोभाल के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट में मुकम्मल किया गया, जो रात 1:05 पर शुरू हुआ और 1:28 पर ख़त्म हो गया था। इसी बीच अजीत डोभाल ने गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है कि भारत को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो तस्वीर सैटेलाइट इमेजेस दिखाएं। उनका कहना था कि आज के दौर में हर तरफ सैटेलाइट कैमरे हैं, कोई एक तस्वीर दिखा दें जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVAX, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in. So we're very able to achieve it. We are capable of doing that. So the country's challenges before the country, as I said, are very great.